Hello students, today I bring for you new chapter Locomotion and Movement. In this chapter we will solve a total of 28 questions which are coming in the previous 10-year exams of NEET exam from 2013 to 2023. So without wasting any time, let's start the first question. First question is the matching one, types of joint and found between. You can see first one, cartilaginous joint. Cartilaginous joint, it is found between the adjacent vertebrae in the vertebral column. So option number second. Ball and socket joint, it is found between the humerus and pectoral girdle. Fibrous joint, it is found between the flat skull bones. Option A. And saddle joint, it is found between the carpal and metacarpal of thumb. So according to this, 2, 4, 1, 3. Okay, 2, 4, 1, 3. See, 2, 4, 1, 3. Option number A will be your answer. Okay, next question. Question number second. Which the following statement are correct regarding skeletal muscle? First of all, muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer called fascicle. ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, हम बताएंगे एक्सप्लेनेशन में क्यों गलत हुआ ये. सेकेंड, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर्ड हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस. करेक्ट है ये. थर्ड, स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स. बिल्कुल सही. एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर. गलत हो गया ये. तो बी एंड सी आर द करेक्ट वन, मीन्स ऑप्शन ए हमारा आंसर. अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. एक्सप्लेनेशन समझना अच्छी तरह से. ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द फर्स्ट वन, मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड fascicle. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज मसल बंडल्स आर एक्चुअली कॉल्ड fascicles and they are held together by collagenous connective tissue layer that is called perimysium. Perimysium. That's why A statement is incorrect. And D statement is incorrect because the sarcomere is the basic functional and structural unit of muscle contraction. The M line is a structural protein that helps stabilize the central region of the sarcomere. That's why D statement is also wrong. Next question, question number 3. Choose the incorrect statement about muscular tissue. Incorrect बतानी. Okay, incorrect one. Muscular tissue को लेके देखो. Here are the options. Smooth muscles are multinucleated and involuntary. Correct है ये. Skeletal muscle fibers are uninucleated and found in parallel bundles. ये भी correct है, हमें incorrect ढूंढना है. Okay. Third, intercalated disc allow the cardiac muscle cells to contract as a unit. बिल्कुल सही. The walls of blood vessels are made up of columnar epithelium. ये गलत हो गया. यहाँ पर क्या होगा? Wall of blood vessel is made up of squamous epithelium. So D is the wrong one, incorrect one. Next question 2022 में पूछा गया था. ये देखो, according to sliding filament theory, the actin filament slide away from a bend resulting in shortening of sarcomere. गलत स्टेटमेंट है ये. Actin and myosin filament slide over each other to increase the length of the sarcomere. ये भी आपका गलत है. थर्ड, लेंथ ऑफ ए बेंड डज नॉट चेंज. ये करेक्ट आंसर है. एंड आई बेंड इंक्रीजेस इन लेंथ. ये गलत हो गया. अब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्यों गलत हुई इसको समझते हैं अच्छी तरह से. देखो क्या दिया. द एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड, एवं जो लिखा गया ना, स्लाइड टूवर्ड्स the center of the sarcomere resulting in shortening. Okay, the actin filament slide towards the center and that resulting the shortening of the sarcomere. Okay, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. ए बेंड की तरफ नहीं होता, ये सेंटर की तरफ स्लाइड होता है. सेकेंड,
Actin and myosin filament slide over each other to increase the length of sarcomere. यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज की जगह पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो आंसर सही होता आपका। लेंथ ऑफ आई बैंड डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही। आई बैंड इंक्रीज इन लेंथ, आई बैंड डिक्रीज होता है लेंथ में अपनी, ना कि इंक्रीज होता है। इसी वजह से ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए और सी वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, gout is a type of disorder which leads to, gout is a type of disorder that leads to weakening of bones due to low calcium level, inflammation of joint due to accumulation of uric acid crystals, weakening of bones due to decreased bone mass, and inflammation of joints due to cartilage degeneration. So here the answer will be option number B, inflammation of joint due to accumulation of uric acid crystals, and that is called gout. Okay, बाकी सारे गलत हो। Next question number 6, given below are two statements, sorry assessment region type questions है। देखो assertion, osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased change of fracture. Okay, second, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। यहाँ पर एसर्शन सही है बट रीजन गलत हो गया। कहाँ पर गलत हुआ, यहाँ पर इस वजह से गलत हो गया। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस ज्यादा है, ताकि बोन मास डिक्रीज हो जाएगा और उसके साथ साथ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाएगा। सो हियर your answer would be option number C, A is correct but R is not correct. Next is question number 7, which of the following is correct match for disease and its symptoms? Correct match क्या है, arthritis, inflamed joint, tetany, high calcium level causing rapid spasm, myasthenia gravis, genetic disorder resulting in weakening and paralysis of skeletal muscle, muscular dystrophy, and autoimmune disorder causing progressive degeneration of skeletal muscles. So here it is asking with the correct match pair for disease and symptoms. So according to the statements, option number A is the correct one. Arthritis means inflamed joints, but others are tetany. Tetany is the लो कैल्शियम लेवल, अगर ब्लड में लो कैल्शियम लेवल होगा तो रैपिड स्पाज्मा कराएगा ये, और इसको दूसरी वर्ड में कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है इसे। अब ये स्पाज्मा क्या है, स्पाज्मा समझो, स्पाज्मा इज द सडन मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। जो हमारे वॉल्यूंटरी मसल्स है ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स की तरह एक्ट करेंगे। जैसे आपकी फिंगर्स हो गए, आपके ना चाहते हुए भी उनमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हमने नाम दिया स्पाज्मा, और स्पाज्म भी कहा जाता है इसे, SPASM भी कहा जाता है इसे। सो टिटन इज द लो कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा ब्लड में तो ये कॉज कराएगा क्या, रैपिड स्पाज्मा को कॉज कराएगा ये। इसको दूसरे वर्ड में कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिया, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया, ओके हाइपोकैल्सीमिया, और टिटनी ये नाम दिया गया इस बीमारी को। माइस्थेनिया ग्रेविस ये क्या होता है, यहां पर तो लिखा गया इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक नहीं होता, ये क्या होता है, इट इज ए क्रोनिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कहा गया इसे, क्रोनिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, और दूसरे नाम से कहेंगे तो क्रोनिक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर भी कहा जाता है इसे। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस दैट इज द वीकनिंग ऑफ पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। मस्कुलर डिस्ट्रोफी इट इज ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, इसी वजह से ये भी गलत हो गया, ये होता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्लियर है, तो इसी वजह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junctions leads to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles is called as। अभी हमने सॉल्व किया, क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या नाम था उसका,
ऑप्शन बी माइस्थेनिया ग्राविस। अभी हमने सॉल्व किया इसे, सो माइस्थेनिया ग्राविस इज द नेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमियम, स्कैपुला, ग्रेनाइट कैविटी। कॉलम 2 में लोकेटेड बिटवीन द सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स, हेड ऑफ द ह्यूमरस, क्लाविकल डू नॉट कनेक्ट टू द स्टर्नम। So here, one second. Floating ribs. It comes to do not connect to the sternum because हमारे जो रिब केज, जो 12 पेयर के जो रिब केज होते हैं उसमें से 11th एंड 12th पेयर के जो रिब है उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि वो पीछे साइड बैकबोन से तो जुड़े हुए हैं वर्टिकल कॉलम से, बट फ्रंट साइड में जो स्टर्नम होता है, जो चेस्ट बोन है, उसके साथ ही कनेक्ट नहीं है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा गया। Acromion is a flattened projections of the scapular spine. The clavicles lateral and articulate to the acromion process between the second and the seventh rib. The scapula is flattened triangular bone, the dorsal region of the thorax. So here acromion comes to clavicle. Scapula, it is located between the second and seventh ribs, and glenoid cavity is the head of the humerus. The shoulder joint is found by glenoid cavity of the scapula articulating with the head of the humerus. So option number, which one is the correct one? You can see 4 3 1 2 4 3 1 2. Which one is the correct one? Option number C is the correct one. Next question number 10. Again matching. Here are some diseases and what problems causes them. Gout. We already know this gout. Gout is a accumulation of uric acid crystals in the joints. Okay. Second, osteoporosis. Osteoporosis is the decreased level of estrogen. We just solve in the upper questions. Tetany, it is the low calcium level, iron in the blood, and muscular dystrophy is a autoimmune disorder. Sorry, muscular dystrophy is a genetic disorder. Myasthenia gravis is a autoimmune disorder. Muscular dystrophy is a genetic disorder. So according to this, your answer will be 3 1 2 5. So come to the options. 3 1 2 5. You can see option number A is the correct one. 3 1 2 5. Okay. Next, question number 11. Which of the following muscular disorder is inherited? पेरेंट से ट्रांसफर, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। ये भी हमने सॉल्व किया था अभी जस्ट। मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज योर आंसर। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ओके, इट इज द 11th क्वेश्चन आंसर। It is a progressive degeneration of skeletal muscles caused primarily by hereditary conditions, whereas tetany is a muscle spasm caused by lack of calcium in the body fluid. Myasthenia gravis is a autoimmune disease that causes skeletal muscles weakness, and bacteria Clostridium botulinum causes botulism, an uncommon and serious type of food poisoning. ये जो botulism की बात हो रही है, ये क्या है? इट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, एक बैक्टीरिया है जो इस बीमारी को फैलाता है। ये मोस्टली क्या होता है? इट इज ए सीरियस टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग है। इट इज ए सीरियस टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 8th 9th 10th पेयर ऑफ रिब आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टेरनम। 11th 12th पेयर ऑफ द रिब्स कनेक्ट टू द स्टेरनम विद द हेल्प ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज। ईच रिब इज ए फ्लैटेंड थिन bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. And fourth one, there are 7 pair of vertebrosternal, 3 pair of vertebrochondral and 2 pair of vertebral ribs. यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला 8th 9th 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली टू स्टर्नम, रॉन्ग वन। 11th 12th पेयर रिब और फ्री फ्लोटिंग हमने पढ़ा था अभी, तो ये किससे भी जुड़े नहीं है। ईच रिब फ्लैट थिन बोन लाइक स्ट्रक्चर, ये भी गलत। डी इज द करेक्ट वन। Explanation: Vertebrosternal ribs are real ribs that are joined to the thoracic vertebrae on the dorsal side and connected to the sternum on the ventral side of the highland cartilage. True rib are the first 7 pair of ribs that attach to the sternum ventrally. The 8th, 9th and 10th
pair of ribs do not articulate directly with the sternum but instead use the hyaline cartilage to connect the seventh rib. These are vertebrochondral ribs, sometimes known as false ribs. The last two pair of ribs, 11th and 12th pair, are called floating ribs because they are not attached ventrally. So D is the answer. Now question number 13. Calcium is important in skeletal muscles contraction because it binds to troponin to remove the masking of active sites on actin and myosin, activate the myosin ATPase by binding to it, detaches the myosin head from the actin filament, prevent the formation of bonds between the myosin cross bridges and the actin filament. So why calcium is important? Option number 1. Others are wrong statements. It binds the troponin to remove the masking of active sites of actin for myosin. Okay? Explanation. Calcium binds the troponin causing tropomyosin to move away from the face of the actin filament where myosin head must engage in order to cause its contraction. So A is the answer. Next question number 14. 2017 का क्वेश्चन है ये देखो. Pivot joint between atlas and axis is a type of. Pivot joint कैसा होता है? It's type of which type of joint it is? It is a synovial joint. Option number C. Okay, option number C is the answer. Explanation. A fluid-filled synovial cavity exists between the articulating surface of the two bones in synovial joints. Joints between the atlas and the axis are examples of pivot joint. So C is the answer. 15. Out of X pair of ribs in human, only Y pair are true ribs. Select the option that correctly represents the value of X and Y and provide their explanation. X12, Y7, true ribs are attached dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. X12, Y7, out of X pair of ribs, हमारे बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं. ट्रू रिब्स कितने को कहा हमने? 7 पेयर्स को ही ट्रू रिब्स कहा और ये यहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है. सो पहला ये आंसर ये करेक्ट है. दूसरे में भी आ जाते हैं, चलो देख लेते हैं. B12, Y5 ये गलत हो गया. X24 भाई हमारे बॉडी में 12 पेयर होते हैं, है ना. सो ये भी गलत हो गया. एंड द लास्ट वन इज ये भी गलत हो गया. ओके, सो ए इज द आंसर. Explanation. True ribs 1 to first 7 pair are dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. False rib 8th, 9th and 10th pair, they do not articulate directly to the sternum. Instead they are using the hyaline cartilage to link the 7th rib. Floating ribs 11th and 12th pair of ribs, they are not linked ventrally, that is no connection with the sternum or the other ribs. They are free floating ribs. Next question number 16. Hypersecretion of growth hormone in adult does not cause further increase in height because growth hormone becomes inactive in adult. गलत, हार्मोन कभी inactive नहीं होता. Epiphyseal plates close after adolescence. Bone lose their sensitivity to growth hormone in adult. Muscle fiber do not grow in the size after birth. ऑप्शन बी आपका आंसर है. Epiphyseal plate close after adolescence. ये प्लेट्स क्लोज हो जाते हैं ताकि उसके बाद एडोलेसेंस के बाद कितना भी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो वो क्या हो जाता है, ग्रोथ में हेल्प नहीं कर पाता, हाइट बढ़ता नहीं है. सो एक्सप्लेनेशन. बिकॉज द एपिफिशियल प्लेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोन ग्रोथ एंड क्लोजेस आफ्टर एडोलेसेंस, हाइपरसेक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट रिजल्ट इन द फर्दर हाइट गेन. बी इज द आंसर. 17. Which the following type of muscle fiber will be the first one to undergo fatigue? Aerobic fiber, slow oxidative fiber, fast oxidative glycolytic fiber, fast glycolytic fiber. So here your answer will be option number D, fast glycolytic fiber. Explanation. Fast glycolytic fiber exhaust quickly but slow oxidative fibers are more fatigue resistant. Fatigue resistant slow oxidative muscles fiber are found in greater abundance in the muscles that must be active continually, such as weight supporting postural muscles. So option D is your answer. Now 18. Which one of the following is not a ciliary movement? Ciliary movement नहीं है इनमें से कौन सा?
food gathering in paramecium, removal of dust particles in trachea, passage of ova through female reproductive tract, movement of macrophage and leukocytes. सिलियरी मूवमेंट नहीं है इनमें से कौन सा? ऑप्शन डी, मूवमेंट ऑफ मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स. एक्सप्लेनेशन. Ciliary movement occur in most of our internal tubular organs which are linked to ciliated epithelium. The coordinate movement of cilia and the trachea in the trachea help us to removing the dust particles and some of the foreign particles inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also affected by ciliary movement, but the movement of macrophage and leukocytes is not a movement of ciliary movement. Question number 19. An athlete while running fell on the track. She used her hand to sustain minimal injury. In this process, her hand received a maximum blow on the joints. Which combination of joint would be badly affected in this accident? Cartilaginous and synaptic joint, fibrous and cartilaginous joint, fibrous and synovial joint, cartilaginous and synovial joints. So what will be your answer? Which joint will be badly affected in this accident? Now here, option number C, fibrous and synovial joint will be your answer. This joint will affect much more, badly affected in this accident. Explanation. These joints are mostly present between the joint of the hand bones. That's why they are badly affected in this accident. Question number 20. Osteoporosis and hereditary disease of the skeletal system may occur due to osteoporosis. Decreased level of estrogen, बिल्कुल सही, पहला ही आंसर हो गया. एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस ज्यादा है ना. सेकेंड, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इसको तो हमने गोट कहा था, है ना. थर्ड, इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू फैटिग्यू, इसको हमने कहा था माइस्थेनिया ग्राविस. एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम, दैट इज कॉल्ड टिटानी. सो ए ऑप्शन इज द आंसर, ऑस्टियोपोरोसिस. ओके. नेक्स्ट 21. नेम द आयन रिस्पांसिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिड्ज एक्टिविटी ड्यूरिंग muscle contraction. Sodium, potassium, calcium, magnesium. Here the answer is the option C, calcium. Explanation. Calcium ions are stored in the endoplasmic reticulum, which are also known as sarcoplasmic reticulum of muscle fiber. An increase in calcium level causes calcium to bind to a subunit of troponin on acting filament, removing the masking of myosin active sites. So calcium is the answer. 22 question number. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as option A, spasm. Spasm को हमने पहले ही समझा दिया था आपको. It is a sudden involuntary contraction of the muscles, a group of muscles or a hollow organ such as the bladder, इसको हमने spasm कहा. Fatigue, muscle comes weaker and tired due to vigorous exercise. It leads to the formation of lactic acid in the absence of oxygen. This is called fatigue. And tetanus is the lack of relaxation between the subsequent stimuli in the persistent muscular contraction, that is called tetanus. And tonus is the slight contraction of the muscles in the resting site to maintain the posture, that is called tonus. So इस तरह से आंसर क्या होगा 22 का? Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as अभी तो मैंने आपको समझाया. स्पासम होता है सडन इन्वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन, है ना. स्पासम क्या है? सडन इन्वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन. फटिग्यू हमने देखा, टिटेनस
lack of relaxation between the subsequent stimuli in the persistent muscular contraction. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मैंने स्पासम कह दिया था, पर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, टिटानस. ओके, नेक्स्ट वन 23. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज क्या होगा, actin and myosin filament do not shorten but rather slide past each other. Option B. When myosin filaments slide past each other, myosin filaments shorten while the actin filament do not shorten. Third, when myosin filaments slide past each other, actin filaments shorten while the myosin filament do not shorten. Fourth, actin and myosin filaments shorten and slide past each other. So here your answer will be, which can be the best explained, in option number A. Actin and myosin filament do not shorten but rather slide past to each other. Question number 24. Which one of the following joint would allow no movement? Cartilaginous joint, synovial joint, ball socket joint, fibrous joint. Here your answer will be the option D, fibrous joint. There is no movement in the fibrous joint. There is a very limited movement allowed in the cartilaginous joint. Synovial joint on the other hand allow for a lot of movements. So option D is your answer. Question number 25. Stimulation of muscle fiber by a motor neuron occurs at sarcoplasmic reticulum, neuromuscular junction, transverse tubuli, tubules and microfibril. Here your answer will be the option B, neuromuscular junction. The neuromuscular junction or the motor end plate is the point where the motor neuron and muscle fibers sarcolemma meet. A neural signal reaching this junction releasing a neurotransmitter acetylcholine which generates an action potential in the sarcolemma. So B is the answer. Next question number 26. मैचिंग दिया गया, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स. Limb filled between the two bones, limited movement. Fluid cartilage between the two bones, limited movement. Fluid filled between two joints, provide cohesion. Fluid filled synovial cavity between the two bones. Gliding joint between the carpals, knee joint, skull bone, joint between the atlas and the axis. So here आपको कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है ये बतानी है. साइनोवियल जॉइंट इन द ह्यूमन, कौन सा साइनोवियल जॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो लिम्ब फील्ड बिटवीन द टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट, ग्लाइडिंग बिटवीन द कार्पल्स, ये साइनोवियल जॉइंट नहीं है. फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट, नी जॉइंट, ये भी साइनोवियल जॉइंट नहीं है. थर्ड आपका दे रहा है फ्लूइड फील्ड बिटवीन द टू जॉइंट्स, प्रोवाइड कोशन, स्कॉल बोन्स, गलत है ये. फोर्थ, फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी between the two bones, joint between atlas and axis, this is called synovial joint. Okay, so D option is the correct one. Explanation की तरफ आएंगे तो देखो, pivot joint connect the atlas and the axis, it is an example of synovial joint, they allow considerable movement. Question number 27. Select the correct statement with respect to locomotion in human. Joint between adjacent vertebrae is a fibrous joint. करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. A decreased level of progesterone causes osteoporosis in old people. Accumulation of uric acid crystals joints causes the inflammation of joints. Vertebral column has 10 thoracic vertebrae. You have to find the correct statement. So first one, joint between adjacent vertebrae is a fibrous joint. It is the wrong one. A decreased level of progesterone की नहीं होगा, एस्ट्रोजन होगा, ये भी गलत हो गया. Accumulation of uric acid crystals in the joint causes the inflammation of joint, बिल्कुल सही, जिसको gout कहा गया. Vertebral column has 10 thoracic vertebrae, गलत, 12 thoracic vertebrae होते हैं. ठीक है, अब आते हैं आगे. सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 27 का. 28. H zone in the skeletal muscle fiber is due to extension of myosin filament in the central portion of the A band,
इसी वजह से एच जोन होता है, गलत। एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल इन द सेंटर ऑफ पोर्शन ऑफ द ए बेंड, ये भी गलत। सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बेंड, सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग टू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बेंड, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। एच जोन इज स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन filament in the A band. Explanation: in A band, the central gap between the actin filament that extends across the myosin filament. In H band, only thick band myosin is present. So option D आपका करेक्ट है। इसके साथ ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। जितने भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने 28 क्वेश्चन सॉल्व किया अभी लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से। नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा वो होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमें टोटल ऑफ 21 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा और आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा। आई होप वो वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा आने वाली नीट की पेपर के लिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छी तरह से। थैंक यू। जय जगन्नाथ।